Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn German Dheere Dheere. Today we are going to learn German reflexive verbs or the reflexive verben, which are the actions that you do to yourself. Here let's look at the definition of the reflexive verbs. What are these reflexive verbs? Reflexive verbs होते क्या हैं? Reflexive verbs describe actions that are done to yourself. For example, I wash myself. Here the subject and the object are the same person, that is I. This is an example of a reflexive verb. So when we have the reflexive verb, we have to use the corresponding reflexive pronoun. So the translation of I wash myself will be Ich wasche mich. मैं खुद को धोता हूँ. So this is the case of a reflexive verb. Here washe or wash is being used in the reflexive form because the subject and the object are the same person, or we can say that the action is being done on the same person. Now, why do we need to learn these reflexive verbs? There are more than 100 German verbs which can be used in the reflexive form. जर्मन लैंग्वेज में 100 से ज़्यादा ऐसे वर्ब्स हैं जो कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं. These reflexive verbs are used to describe the daily morning routine. For example, dressing and showering, rest and relaxation, like relaxing and resting, memories and emotions, like remembering something or feeling something. इन सभी केसेस में जर्मन के जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं. डेली मॉर्निंग रूटीन, ड्रेसिंग, शॉवरिंग में, रिलैक्सिंग में, किसी चीज़ को याद करने में या कुछ किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में we use the reflexive verbs. Here we have the table of the reflexive pronouns. The reflexive pronoun for ish is mish. इसका हिंदी का मीनिंग हुआ मुझे या खुद को. The reflexive pronoun of du is dish. इसका मतलब तुम्हें. The reflexive pronoun for as or he, she or it is sich, means खुद को. The reflexive pronoun for wir means we. जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं we. The reflexive pronoun of wir is uns, means हमें. The reflexive pronoun of ihr is euch. The reflexive of sie or sie, plural or informal, that is sich. Now, how do we build a sentence when we have the reflexive verb? अगर हमारे पास reflexive verb होगा तो हम sentence कैसे form करें? The rule is, first we have the subject, after that we have on the second position we have the reflexive verb, after that we have the reflexive pronoun. So here you can see on the first position पे हमारे पास में है ish means I या मैं. On the second position we have the reflexive verb or washe. Here we have the reflexive pronoun. So as we just saw, the reflexive pronoun for ish is mish. So यहाँ पे हमारे पास में एक पूरा सेंटेंस हो गया. ish washe mish. मैं खुद को धोता हूं. I wash myself. Ish means the subject that is on the first position. जो ish या मैं है वो फर्स्ट पोजीशन पे है. उसके बाद में हमारे पास में रिफ्लेक्सिव वर्ब है. After that we have the reflexive verb washe. On the third position we have our reflexive pronoun means mish or myself. So ish washe mish. I wash myself. Another example. Du kämst dich means you
comb yourself. तुम खुद को कंघी करते हो मीन्स बाल बनाना. Du kennst dich. You comb yourself. So here on the in the first position we have the subject means du or you. After that we have the reflexive verb kennst followed by the reflexive pronoun dich. Similarly we have another example. Sieht sich an. Sieht sich an. He gets dressed. He or we can also say he dresses up himself. Okay, so here also we have the subject and here we have the verb is called anziehen. So here we can see that the verb has been separated. Zieht is on the second position and an is on the is in the last position. So this is called the separable verb. Anziehen means to dress up. Similarly we have abziehen means to undress, and we also have another similar word that is umziehen. Umziehen means to shift or to relocate. So these kind of verbs where we have where we are separating these verb form, these are called separable verbs, which I will cover in another upcoming video. ये जो verb है anziehen, इसको यहाँ पे देखिए कि zit यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है और जो अन था anziehen का जो zit है वो सेकंड पोजीशन पे है और जो अन है वो लास्ट पोजीशन पे है. इसको सेपरेबल वर्ब्स बोलते हैं, जो कि मैं एक अपकमिंग वीडियो में भी जल्दी ही कवर करूंगा. तो यहाँ पे सिर्फ ये जीट जो है फॉर्म ये आ जाएगा, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस जिश. आखिरी पोजीशन में हमारे पास में जो उसका जो सेपरेबल फॉर्म है वो आ जाएगा अन. नाउ let us look at some common reflexive verbs in daily life. How do we use these reflexive verbs to define our daily routine? Ich dusche mich. I shower myself. Ich ziehe mich an. I get dressed up. Ich ruhe mich aus. Ich ruhe mich aus means I rest myself or I rest. मैं आराम करता हूँ. So here we have two examples of separable verb. Anziehen, which became ziehe over here and an at the end, and ausruhen. Ausruhen means to take rest. Here the ruhe came on the second position and aus came in the end, at the end. ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं अनजीहन और आउसरूहन, ये सेपरेबल वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं. लाइक इंग्लिश में हम कभी कभी बोलते हैं आई विल पिक यू अप या आई कॉल्ड हिम अप. इस टाइप से जैसे अप जो आखिरी में आ जाता है, और इस तरीके से हमने वर्ड इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं अप, या और भी कुछ एक एग्जाम्पल्स होते हैं इंग्लिश में. तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो, इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं वो सेपरेबल वर्ब्स कहे जाते हैं. तो डिक्शनरी में अगर हम इन वर्ब्स को देखेंगे तो ये इस फॉर्म में मिलेगा आउसरूहन, अनजीहन, अबजीहन. और इनका जो शुरू का जो वर्ड है जैसे अन या आउस, ये सेपरेट हो जाता है कभी कभी. ये इसका हम कुछ एक अगले वीडियोस में पूरा इसका डिटेल देखेंगे सेपरेबल वर्ब्स का. Here we have the list of some common reflexive verbs. Häufige reflexive Verben. Sich anziehen means to get dressed up. Sich ausruhen means to rest. Sich beeilen means to hurry up. Sich setzen means to sit down. Sich
kämen means to comb hair. Sich waschen to wash oneself. Sich duschen means to take shower. Sich erinnern means to remember something. Sich freuen means to be happy or to be excited about something. Sich interessieren means to be interested about something. ये कुछ एक ऐसे verbs हैं जो कि काफी commonly यूज किए जाते हैं जर्मन लैंग्वेज में. Now let us look at the comparison between reflexive and normal verbs. तो कैसे हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म में और नॉर्मली कैसे वर्ब्स को यूज करते हैं और कैसे सेम वर्ब का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है. रिफ्लेक्सिव यूजेज इश वाशे मिश मीन्स आई वॉश माई सेल्फ. नॉर्मल यूजेज इश वाशे das ऑटो मीन्स आई वॉश द कार. सो द सेम वर्ब with different object means different meaning altogether. Now, here we have the example where reflexive verbs are used as accusative. So most of the reflexive verbs use accusative when there is no other object in the sentence. For example, ish washe mish. Here we have only one object, that is mish. So this is the accusative form. I wash myself. Similarly, du kämst dich. Here also we have only one direct object, means yourself. So here also we have the accusative form of reflexives. Now there can be some cases where dative reflexive verbs have to be used. So we have to use the dative pronoun form of the reflexive verbs. So suppose if there is any other object that is present in the sentence, we have to use the dative pronoun. अगर कोई और ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है उस सेंटेंस में तो हमें dative form यूज करना होता है. Here we have the standard form, or so to say the accusative form ish washe mish. Here we do not have any other object, so here we are using the the accusative form of ish. Suppose if there is a object, for example, here we have die Hände means the hands. When we have this kind of second object, then we have to use the dative form of ish. For example, ish washe mir die Hände means I wash my hands. मैं अपने हाथ धोता हूँ. Here we are using the dative form of ish. Mish is the accusative form of ish because it is the direct object, or so to say this is the first object. Here we have the dative form of ish, that is mir, because here the first object is die Hände. Ish washe mir die Hände. Now there can be cases where some reflexive verbs require a specific preposition to complete their meanings. कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमारे पास में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ में कुछ एक प्रीपोजिशंस भी होते हैं. तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं. Sich freuen auf. Sich freuen auf means to look forward to something या किसी चीज का इंतजार करना. Sich erinnern an means कोई चीज को याद करना, to remember something. Sich interessieren für means किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट होना या किसी चीज में रुचि होना. So these verbs always need their prepositions. Now let us look at some examples. Ich freue mich auf das Wochenende means I look forward to the weekend या मुझे वीकेंड का इंतजार है.
Ich interessiere mich für Deutsch. I am interested in German. मुझे जर्मन लैंग्वेज में इंटरेस्ट है या रुचि है. Ich erinnere mich an dich. I remember you. Now let us look at the word order. Where does the reflexive pronoun go? On the first position, in the normal statement, the conjugated verb always comes in position 2. यहां पे हम देखें कि जो वर्ब है ये हमेशा सेकंड पोजीशन में आता है. फॉर एग्जांपल, ich wasche mich jeden Tag. I wash myself every day. The reflexive pronoun usually comes immediately after the verb or the subject. So here you can see the pronoun comes immediately after the verb, that is on the third position. Whenever we have any questions, the reflexive pronoun comes after the subject. जब हम कोई क्वेश्चंस बनाते हैं जर्मन में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को लेकर के, तो जो प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद में आता है. Now let's look at these modal verbs. What are these modal verbs? Modal verbs such as can, could, might, may, should. These are the verbs that are used to combine the ability, necessity or permission with reflexive actions. जो modal verbs होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं can, might, should, must. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि हमें कुछ एक काम को करने की नेसेसिटी या परमिशंस को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, ich muss mich beeilen means I must hurry myself और I must hurry. muss जो है जर्मन लैंग्वेज में दैट इज मस्ट. मस्ट का जो जर्मन ट्रांसलेशन है दैट इज मुस. Ich muss mich beeilen. So here on the first position we have the subject, that is ich, followed by the modal verb means muss. After that we have the reflexive pronoun means mich, followed by the infinitive verb. Similarly, du means the subject or you. Sollst means should. Sollst means sollst is the German translation of should. Okay, ich soll, du sollst, sie sollen, and so on. So du is the subject, sollst is the modal verb. Sollst means should. Dich is reflexive pronoun. Okay, waschen means the infinitive verb. Du sollst dich waschen. You should wash yourself. तुम्हें खुद को धोना चाहिए. Now here we have a small quiz. यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा क्विज है. Ich sehe blank an. Second question. Wir ruhen aus. Du beeilst blank. Er wäscht blank. Okay. इसका जवाब मैं आपको 1-2 सेकंड में देता हूं. आप थोड़ा तब तक सोचिए. Now let us look at the answers. Ich sehe mich an. Wir ruhen uns aus. Ich का जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म था दैट इज मिश. wir का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था दैट इज uns. du beeilst dich मीन्स यू मस्ट हरी. du का जो फॉर्म था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था दैट इज dich. er wäscht sich, he washes himself. Now we have the second quiz.
हमारे पास में अब सेकंड क्विज है, दूसरे नंबर का जो क्विज। यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करना है जर्मन में। We have to convert these English phrases to German reflexive sentences. I wash myself. I get dressed. We rest. You hurry. आप इनका जवाब सोचिए और मैं अब आपको इनका सही जवाब दिखाता हूं, सही जवाब आपको रिवील करता हूं। Ich wasche mich. यहां पे इश का जो प्रोनाउन है दैट इज मिश, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज मिश। Ich wasche mich. Ich ziehe mich an. I get dressed. Wir ruhen uns aus. Wir का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था दैट इज uns. Du beeilst dich. You hurry up. Here we have the multiple choice questions. We have to select the, for example, here in the first question, we have to select what is the reflexive pronoun for wir. That is uns. What case is used in Ich wasche mir die Hände? Mich is used when we have the accusative, but when we are using mir, because here we have the first object as the Hände and the second object is ourself. So this is the case of second object or dative. Which verb means to hurry? Sich beeilen. Here we have to complete the sentence. Ich muss mich beeilen. यहाँ पे हमारे पास में आंसर्स हैं. Here we have the answers. Uns, dative, sich beeilen and mich beeilen. Let us do a quick recap. हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का. Ich, mich, du, dich, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sich. Here we have the common mistakes that people make in reflexive verbs. These are the häufige Fehler. Häufige means common or something that occurs very often. Fehler means mistakes. This one is incorrect. Ich wasche mir, because we do not have any other object. So if we do not have any other object, then we should not use the dative form. We should use the accusative form. Ich wasche mich. Wir ruhen sich aus. That is also incorrect, because when we have wir means we. The correct pronoun for wir is uns. So the correct translation will be wir ruhen uns aus. We rest ourselves. Subject mismatch. Du beeilst mich. So that's why mich should not be used. Instead of mich, we should use dich. You hurry yourself or you hurry. Du beeilst dich. Ich के सामने हम यूज करेंगे mich. Wir के लिए wir यानी we. इसके लिए हम यूज करेंगे uns और du के लिए यूज करेंगे dich. Here we have a quick review of. Here we have the flashcard for the vocabulary that we just saw. हमने आज जो भी vocabulary सीखी उसका एक छोटा सा फ्लैश कार्ड सा बनाया है. Sich beeilen means to hurry up. Sich setzen means to sit down. Sich freuen auf means to look forward to. Sich erinnern an means to remember something. Sich interessieren für means to be interested in something.
Now, this is the summary of today's lesson. So, what are these reflexive verbs? Reflexive verbs describe actions that are done to oneself where subject is same as the object. Reflexive pronouns. Always use the correct pronoun. Mich, dich, sich, uns, euch, sich. Accusative versus dative. Accusative, we will use the accusative form when there is no other object involved. Ich wasche mich. I wash myself. So here we do not have any other object. So we will be using the accusative form. Now when we have another object, then we will go for the dative form. Ich wasche mir die Hände. Mir is the dative form, whereas mich is the accusative form. Mich is accusative because here we have the direct object. Mir is dative because here we have the first object is the Hände and second object is myself or me, mir. रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में सब्जेक्ट खुद पर एक्शन करता है। तो दोस्तों अब समय आ गया है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है जो जैसा कि मैंने कहा सेपरेबल वर्ब्स के ऊपर। तो देखते रहिए मेरे चैनल और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। चीयर्स।